Hello everyone. I would like to start this international webinar with this special quote that is success usually come to those who are too busy to be looking for it. I do repeat. Success usually come to those who are too busy to be looking for it. So starting a new chapter, I Abhishek Kumar being your host want to extend a very warm welcome and very good evening to all of you present here, and I hope you all are doing amazing. So, on the behalf of the whole SEMS family, I welcome you all for this international webinar on the topic passion as a catalyst for innovation in teaching. And to add our guest of honor and our speaker, Dr. Lovens Talwar sir. Sir, it's a great honor to have you with us, and we are very much thankful for your presence. Now, let me introduce our speaker to you all. That is Dr. Loves Talwar. Talking about his education qualification is that he has done bachelor's in engineering in ECE branch from MBS College of Engineering and Technology Jammu. After that, he has done MTech from Sri Mata Vaishno Devi University, Jammu, Katra. Right now, he is working as the head of department for ECE branch at Yog Nanda College of Engineering and Technology, Jammu. Earlier, he has worked as the same head of department for the ECE branch at IECS Polytechnic. Before that, he was working as a lecturer for ECE department at the Government Engineering College and Technology, Jammu. Before that, he was working as the engineer at Beggars Paint India Private Limited. Talking about his additional duties and responsibilities, that he worked as the controller of examination for the smooth conducting of the internal exams, external exams, semester exams, practical, and lots more. He also working as a internal assessment inspector for checking and verification of the internal records. Apart from that, he is also a committee member of anti-ragging in order to avoid exterior and interior ragging procedure in the college campus. Apart from that, he also worked as the sports coordinator at the college. He also worked as the co-convencer for the international conference RITS for the year 2015. Apart from that, he also worked as a training and the placement coordinator for his ECE department at the college YCET Jammu. Apart from that, he is also a member of the second international conference RITS 2020 and lots more. Once again, I would like to thank the SEMS organization who have given me the platform to deliver a talk on this important topic. But before starting my presentation, I would like to thank Mr. Abhishek, who will coordinate this program. I think from the last 3 to 5 days, I'm in contact with Mr. Abhishek. So, Abhishek, thank you so much for inviting me to express my views on this international webinar. I would also like to thank the participants who spare his precious time and become the part of this program. So, as the today topic for the international webinar is basically, I'm saying that is passion as a catalyst for innovation in teaching. So this topic is very, very important. Like you can say that a passion as a catalyst for innovation in teaching. Here you can see that there are two words that is most and most important words associated with this international webinar. One word is called as the passion, and another is called as the innovation. We all know from the last 2 to 3 years, or even we can say that from the last 3 to 4 years, India is making towards some innovation, some startups, and our honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji's main focus on making India Atmanirbhar Bharat. So all these things are coming from, you can say that the innovation things. We are using the innovation things in our day-to-day life, but how this innovation helps us in a teaching process. And most important thing is that in all these innovations can be carried only and only when you have a passion.
for that. I don't know that how many participants are agree with me to perform any of the task, your daily routine task, or your from your you can say that your work, whatever the work you have done. If in that work there is no passion, I think that task or that job will be something like you can say that you can say that important. So making a passion is very very important. So in the coming slides, I can tell you about certain things that how this passion uh, becomes as a catalyst for innovation in teaching. Okay, so the learning objective for this international webinar that we should promote active learning, match students and faculty expectations, stimulate learning in trainings. So these are the three outcomes, or you can say that the learning objectives. I think uh, from the end of the webinar, I'll try my best that we can cover these three important aspects. Okay, so very first thing, whenever we have a classroom, in a classroom there are a blend of a blend of students will be available there. These students are come from the different cultural backgrounds. Some students are from the different language abilities. Some of have a different intentions and different interests. Some of them come from different educational backgrounds, have different needs. So you can see that in a classroom of either you can say that a school classroom, or you can say a QG classroom, or you can say the PG classroom, whatever the classroom. In a classroom, there are two important things are to be present. One is a student and another is a teacher. In that classroom, beyond that, there is nothing present. Teacher is only one, but a student have a lot of variety. Some are from different background areas, like I can see. So important thing is that a teacher that will be in the class, they have to take an account of all these things into their consideration and start training these students. So this is the thing that a teacher should be kept in mind while delivering any of the lecture, any of the lesson to the student. That text oriented, emphasis on completion of syllabus, the chalk and the talk, teachers directed from classroom processes. So these are the four activities that every teacher has to be performed while taking a class or while taking a lecture. But here, the important thing is that in early days, these are some conventional ways of teaching where we have a chalk and you can say that a blackboard to be there. But nowadays, this technology has been changed. And in the coming slides, I will show you that how your traditional teaching can change nowadays teaching. In earlier days, we know that whenever a teacher go to the class, they have some textbook, some material. He will write something on a blackboard, and the students are copying from this blackboard and all these things. On the other stand, you can see what the students have to be taken into consideration. A role learning focus on testing and marks, disengaged and achieves below their potential. So these are the two things that occur in a classroom. Okay, this is one of the most important statistics that we have different type of category of people in different areas of born, and nowadays they are something like this thing. We have GI generation. Their GI generation are the generation where they are born in the year 1900 to 1924, and as of now the age is about 85 to 100. There are silent generations. Today, there are age is about 64 to 84. Baby boomers, that is the age is 45 to 63. Generation X and Generation Y. Now, here we have to focus on these important generations, that is Generation X and Generation Y. And I think in this seminar, all the participants, all the, you can say that the programmers, or all the people should be present there, they must lie in the generation X and generation Y. So see what will happen in generation X and in generation Y. What will be happen? What type of mentality? What type of things that will be kept in the minds of the students as well as the teachers for the generation X and generation Y? Okay. So this is basically a bar chart. Here you can see on the left hand side there is a faculty and a student relation. The green color indicates about the faculty and the blue color indicates the student. But on the right hand side you can see a bar graph in which
We will categorize the students as generation X, generation Y, and a boomer. That I have already tell you that today's scenario, there is a lot of students categorized or coming in the category of generation Y. There is little bit students who are categorized or coming in the generation of generation X, and very few students are in the boomer section. Okay, so this is the thing, that is generation X students. The X generation students are basically the students where both the parents are working. This is basically the challenge. This is the analysis. This is the statistics we have taken it from account. That the generation X student, both parents are working, or many from the single parent home. They are technologically savvy. They grew up with the corporate divinization and layouts, fewer career opportunities. This type of mindset we have the students that belongs to generation X. Although the more important points to be there, they are independent, they are problem solvers. They are ambitious, self starters who want sport but do not want to be told what to do or how to do it. This is the most and most important point. Expect instant gratification, immediate feedback. No, they must keep learning to be a marketable. So these are the things. These are the, you can say, the study revealed that the generation X student has this type of mindset. They require these things. On the other hand, if we see generation Y students, because I have already told you that I had categorized all the students in generation X, generation Y, and boomer generation. And here I am focusing only towards generation X and generation Y. So coming to the part of the generation Y student, largest generation since baby boomers, many from divorced single parent home, but parents are extremely hands-on, overprotective, self-absorbed, another say technological scam. So this is the thing we analysis from generation Y student. In addition to that, self-confident, ambitious with high expectations, want to know the process, rule, how to get ahead, expect to start at the top, want constant and immediate feedback, move quickly from one thing to the another thing, not as an independent as generation X, like parental back. So this type of things, this type of mindset the students have in our today's age generation, whether it is generation X and generation Y. But they forget that how they will become as successful persons. Now, here I will tell you a one story so that you can get an idea that how a person is get successful, how today's generation is little bit, or you can say that different from the generation we have earlier. This story is basically a story of Guru and Shishya. Now, what will happen? I can use both the languages, Hindi or English, so that this webinar will become as more interesting rather than some boring, or you can say that uh, like all these things. So मैंने जैसे पहले बताया कि जनरेशन एक्स के स्टूडेंट्स एंड जनरेशन वाई के स्टूडेंट जो होते हैं इनमें एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो मानी जाती है वो देखा ये गया है दे आर सेल्फ कॉन्फिडेंट उनमें पेशेंस लेवल बहुत कम है फास्ट अर्निंग है उनको क्या है आज कुछ इन्वेस्ट किया कल हमें उसका रिटर्न मिलना शुरू होगा जो कि पॉसिबल नहीं है नाउ इस चीज को कवर अप करने के लिए मैं एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ डिस्कस करता हूँ दैट स्टोरी बेसिकली द गुरु एंड शिष्य स्टोरी अबाउट द सक्सेस क्या होता है एक बार एक गुरु जी और एक स्टूडेंट आपस में बैठे होते हैं और जो स्टूडेंट है वो गुरु जी से बोलता है गुरु जी मुझे सक्सेसफुल बनना है तो क्या आप मुझे कोई गुरु मंत्र देंगे कि मैं किस तरीके से सक्सेसफुल बनूं बिकॉज वी ऑल रिमेम्बर हमारे इंडिया में स्टार्टिंग फ्रॉम वेदास हम लोग गुरु शिष्य की एग्जाम्पल लेके कोट करते हैं सो गुरु जी ने जब उस शिष्य की बात सुनी कि वो एक सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहता है तो उन्होंने कहा ठीक है हम एक काम करते हैं बेटा हम सुबह तुमसे मिलते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग एट 4 o'clock यू कम टू माई ashram at early morning in the 4 o'clock and I will tell you a guru mantra to become a successful person. So next morning, what will happen? The Shishvi came to the ashram and Guruji was there. Now, it was, you can say that a peak a winter season around, you can say the month of the December or January. So what they do, Guruji अपने शिष्य को लेके अपने आश्रम के साथ एक नदी में चले जाते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग एट द 4 o'clock एंड वो नदी में पहले खुद जाते हैं और वहां
डिप लेना शुरू करते हैं, मतलब एक तरह का नहाना शुरू करते हैं। एंड आफ्टर सम टाइम ही कॉल्ड हिज स्टूडेंट और शिष्य, समथिंग लाइक दैट, उसको बोलते हैं कि तुम भी अंदर आओ। शिष्य भी उनके साथ अंदर जाता है। द मोमेंट वो शिष्य गुरु जी के पास जाता है तो गुरु जी क्या करते हैं, उसको गर्दन से पकड़ के पानी में डिबो, गिविंग अ 3 or 4 jerks, एंड उसको टाइटली इसको पैक कर लेते। देन द स्टूडेंट विल से, गुरु जी आप ये क्या कर रहे हैं, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। उसको बड़ा वो टाइटली होल्ड करके रख, बहुत टाइटली होल्ड करके रख, मतलब उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि वो कहते हैं ना जीने मरने की बात हो जाती है। तो एनी हाउ एक पॉइंट, एक टाइम, एक चीज टाइम ऐसा आता है कि वो उस चीज को रेजिस्ट करता है, रेजिस्ट करने के बाद वो बाहर। सो यहां से गुरु जी उसको एक मंत्र देते हैं कि ये चीज तूने कब करी, जब तेरे पास सारी एक्सटर्नल फोर्सेस मैंने अप्लाई कर दी, तुझे एक ठंडे पानी में एट द कोल्ड वेदर कंडीशंस में मैंने तुझे डिप किया। डिप करने के बाद, ये सारी कंडीशन करने के बाद, इवन की तेरा जीने मरने का पॉइंट मैंने निकाल दिया और तूने सारे रेजिस्ट, उस चीजों को रेजिस्ट करके तू अपने आप को बाहर निकल के आया। दैट इज कॉल्ड एज द सक्सेस। सक्सेस इज नॉट थिंग दैट आज आपने एक इन्वेस्टमेंट किया और कल आप चाहते हैं कि उसका 100% आपको रिटेन होना शुरू हो जाए। नो, सक्सेस मीन्स कितना हार्ड वर्क आप उसमें लगाते हैं। द पॉइंट, जितना हार्ड वर्क आप उसमें लगाएंगे उतना आपको रिटेन मिलेगा। दैट इज अ कॉल्ड एज द सक्सेस, जो कि आज की जनरेशन में, जनरेशन एक्स एंड जनरेशन वाई में सबसे ज्यादा कम है। सो हियर एज ए टीचर, आई एम बिलोंगिंग टू अ टीचर कम्युनिटी, हमारा फर्ज बनता है एक स्टूडेंट्स को ये चीज बताना कि सक्सेस क्या है। बिकॉज ये बहुत अच्छा लगता है व्हेन यू सी वन ऑफ योर पर्सन, वन ऑफ योर कोलीग इज गॉट सक्सेसफुल, तो लगता है कि यार उसने उसने ये सक्सेस कर लिया तो मैंने क्यों नहीं सक्सेस कर पाया। बट उसके पीछे ये देखिए कि उस सक्सेस को अचीव करने के लिए उसका कितना हार्ड वर्क था, वो कोई नहीं देख। और एज अ टीचर इट्स अवर ड्यूटी दैट हम उसको बताएं कि ये चीज, और ये चीज तभी आएगी जब एक टीचर में पैशन, कमिंग स्लाइड्स में मैं आपको बताऊंगा पैशन किस तरीके से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टीचिंग के लिए। बिकॉज विदाउट पैशन आप ये चीजें नहीं कर पाएंगे, और अगर आप चीजें नहीं कर पाएंगे तो आपका स्टूडेंट ये चीजें नहीं कर। आई होप दिस स्टोरी विल something a dent on something mind, that how you will become as a successful. Next, we have a teaching learning process. Like one thing I will tell you, I will give you 3 to 4 stories so that this webinar will become as a little bit interactive webinar rather from the teaching. The reason is that if you go through the Google, you can type that what is the teaching learning process, the blah 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 will be open in a chat GPT or a Google Band, सब कुछ आपको मिल जाएगा। बट उस चीज को किस तरीके से ऐसे कैटालिस्ट आपके दिमाग में रहे, द मेन पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग दिस सेमिनार इज दैट, because we all know we have everybody having a knowledge. Only thing is that thing how you can take. And one thing that you always kept in mind, and you will be agree with me, that if you give certain examples to another one, these examples are definitely mark as imagination or mark impress on your brain. कभी भी कल को आप कहीं भी इस चीज को अगर यूज करोगे तो आपके पास वो एक एग्जाम्पल आपके दिमाग में याद रहे। सो आई विल गिव यू वन मोर अनदर एग्जाम्पल। So this is all the teaching learning process. Now, in our generation, in today's generation scenario, our students, they are facing these type of problems. They are sufferers and scanners, not reader, not digesters. These are the problems faced by the student. And mind it, these all statements are, these all things we have taken into survey. Expect constant and immediate feedback. Technological scabby, but crave personal contact. Always hurting. Know what they want. They want to learn. On the another hand, our faculty, the teachers, healthiest and wealthiest of generation of date, redefine traditional values. They are hardworking, passionate, and change the world. But believe in hierarchy, may find it difficult to adopt to more flexible arrangements. So these are the challenges in today's scenario in student side as well as in faculties. Okay, so how faculties spend time in a class? In a class, either this class is like I have already told, secondary class, high class, UG class, PG class, postdoctorate class. 60% of the time of the faculty is spending on lecture. 10% student independent. That is the kind of the gap. 10% का student को gap देते हैं. You can do whatever you have. Only 10%. Group work 15%. And this 15% is more from the other work, like taking an attendance, calling the student, and each and everything. So you can see
The major contribution is 60%. So, important point for the teacher's fraternity is that if anybody is a teacher, he or she go to the classroom out of 1 hour lecture, most of the time he's delivering his or her lecture. Only thing is that his lecture will be more, you can say that attractive when he or she has a given material. हम एक टीचर को क्लास में भेजते हैं, उस टीचर के पास मटेरियल है, उस टीचर के पास डिग्री है, वो टीचर पैशनेट टीचर नहीं है, आई कैन यूज द वर्ड पैशनेट टीचर नहीं है, ही इज ओनली गोइंग टू द क्लास, या मुझे टाइम पास कर, मुझे जॉब मिली, मुझे एक लेक्चर देना, बला 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 बोल दिया, उसका टाइम खत्म हो गया। बट स्टूडेंट का लेक्चर वो क्या है, बोरिंग लेक्चर। तो होगा क्या, आज उस लेक्चर में इफ 10 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, सेकेंड डे 8 students were present, third day 6 students were present, and simultaneously attendance will goes on. And another time, if I say a teacher is going to the class, उसके पास डिग्री है, I'm not saying it's a normal degree, उसके पास डिग्री है, बट एक जितनी क्वालिफाइड डिग्री होनी चाहिए उतनी ही डिग्री, उसके पास कोई पोस्ट डॉक्टरेट या डॉक्टरेट नहीं है, बट उसकी लेक्चर में कमांड है, give a certain examples to the student so that student will know, यार इसकी क्लास मुझे लगानी है, इसकी क्लास मुझे लगानी है। तो वो क्लास, चाहे वो क्लास में टीचर अपने 15 मिनट की लेक्चर को डिलीवर करे, that lecture will be a very fruitful to the student, very fruitful. So you always kept in your mind whenever you go to the class, you have enough material with you, because क्लासरूम टीचिंग एक ऐसी टीचिंग होती है, ये मुझे मेरे प्रोफेसर ने, जब मैंने अपना अर्ली स्टेज में पढ़ाना शुरू किया था, मुझे एक अर्ली स्टेज में मुझे मेरे प्रोफेसर ने एक चीज बोली थी कि क्लासरूम इज जस्ट लाइक अ वॉर रूम, आई कैन यूज द वर्ड वॉर रूम, वेयर यू हैव टू बम्बार्ड थिंग्स इन द टर्म्स ऑफ लेक्चर्स। आप वहां से कुछ बोलते हो, बम्बार्डमेंट करते हो, लेकिन काउंटर आएगा, और काउंटर इतना ज्यादा आएगा, यू कांट प्रिडिक्ट। वो काउंटर इरेलीवेंट भी होगा, वो काउंटर इतना खतरनाक काउंटर भी हो सकता है, और अगर आपने उस काउंटर का एनकाउंटर कर दिया, यू विल बिकम एज अ सक्सेसफुल टीचर। बट अगर आपने उस काउंटर का एनकाउंटर नहीं किया, तो यू विल नॉट कॉल्ड एज अ सक्सेसफुल टीचर, then you are only called as a teacher, but you are not called as a successful teacher. At the last, I will tell you one story. उस स्टोरी से आपको पता चलेगा कि टीचिंग में पैशन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट। सो आई रिक्वेस्ट द पार्टिसिपेंट्स टू प्लीज प्लीज, लास्ट की जो मेरी प्रेजेंटेशन, लास्ट में जो मेरी स्लाइड है, प्योरली स्टोरी, प्लीज गो थ्रू दैट स्टोरी। आई होप you can enjoy this session. I hope. So, what are the students' expectations? Earlier, what I have discussed with you people, these are the challenges, these all the things. But what are the students' expectations? So, students' expectation will be he or she required solid knowledge base, real world exam application, want clear and organized presentation of material, want to be stimulated, active, and participatory, want to know how this activity leading connect to the my future career, expect customer services. So these are some students expectation from a teacher side. On the other hand, we have faculty challenges. The most important thing is time, keeping up with their speed, because every day, every minute, every second the technology will change. और अगर आज आपको मार्केट में अपने आप को एक बेस्ट टीचर या बेस्ट कॉम्पिटिटर करना है, तो आपको इस टाइम के साथ उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा। आई डोंट नो कितने लोग मेरे से यहाँ पर रात बार रखते हैं। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पहले भी थे, जूम, गूगल मीट, वेबएक्स पहले भी थे, लेकिन हम लोग हार्डली इसको यूज करते थे। वो सटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, लाइक अगर मेरा कोई रिलेटिव अब्रॉड रहता है, तो मुझे उसके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी होती थी, तो मैं वेबएक्स या जूम पे जाता था। बट कभी किसी ने ये नहीं सोचा था कि जब कोविड आएगा, तो कोविड हमारा पूरा लर्निंग प्रोसेस चेंज हो। देन आई मस्ट अप्रिशिएट ऑल द सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, ऑल द इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। जब हम लोग अपने घरों में लॉकडाउन सिचुएशंस पे बैठे थे, तो हमारे जितने भी इंजीनियर्स हैं, सल्यूट टू दैट इंजीनियर्स जिन्होंने हमारे लिए प्लेटफॉर्म्स लेके आए। आज इस प्लेटफॉर्म के तहत मैं यहाँ जम्मू कश्मीर में बैठ रहा हूँ, मैं यहाँ से लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता मेरे पार्टिसिपेंट्स कहाँ से हैं, किस स्टेट से हैं। सो दिस इज ऑल द टेक्नोलॉजी। तो यही एक फैकल्टी का चैलेंज है। मोस्ट ऑफ द फैकल्टी इन्होंने जिन्होंने इन चीजों को अडॉप्ट किया, जिन्होंने अडॉप्ट किया, चल पड़े। लेकिन कुछ ऐसे टीचर्स भी थे जो अडॉप्ट नहीं कर पाए, they are not become as a successful, you can say that the teachers, they are teachers, not criticizing anything, they are teachers, but they are not called as a successful teacher. So these are the some strategies that teachers must be kept in mind while delivering a lecture.
We must understand learners, accept difference among the students and between students in faculty, engaging students in setting goals and expectations, flexible, most important thing, creative, and not try to be surprised anything that happens in the classroom. Because I have already told you that a classroom is like a war room, जहां पर आपको bombardment होगी, and you are ready to face that bombardment. You have to take a shield. आपको बुलेट प्रूफ एक शील्ड पहननी है. उस बुलेट प्रूफ शील्ड में अगर आप उसको शील्ड पहन के bombardment को काम करते हो और encounter करते हो, you have become a successful teacher. These are certain strategies that I will show you that how this innovation can use in coming years. So I skip it out because I have taken the time is already 6:37 and I have many more stories. Now, this innovation, this is the main important thing. According to the National Education Policy 2020, our whole government of India is totally focusing on this national education policy that is 2020. And according to national 2020 policy, that is innovation in pedagogy, we have experimental learning, hands-on learning, digital learning, inquiry-based learning, real world projects. And I hope this is something change from your conventional learning or conventional teaching to non-conventional teaching. In early days, when हम लोग स्टूडेंट थे, तब हम लोगों के पास ये चीजें नहीं, वो कन्वेंशनल टीचिंग थी जहां पर सॉरी टू से मुझे माफ करिएगा, हो सकता है यहाँ पे जो कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं मेरी एज से भी ज्यादा हो, मेरे मतलब एज से ज्यादा हो, मुझे आई एम एक्सट्रीमली वेरी वेरी सॉरी फ्रॉम माय हार्ट. उनको हम लोग मास्टर जी या मास्टरानी जी बोलते थे जो क्लास में आते थे चौक लेके अ से आम अ से अनार लिखाते थे. बट आज अगर मैं किसी स्टूडेंट को बोलता हूँ अ से आम, वो हो जाएगा गूगल पे चेक करेगा कि आम क्या. दिस इज कॉल्ड एज द नॉन कन्वेंशन. दिस इज कॉल्ड एज द इनोवेशन. दिस थिंग इज कॉल्ड एज द इनोवेशन. आज का स्टूडेंट टीचर से ज्यादा इंटेलिजेंट है. आई एम सॉरी टू से, मुझे माफ करिएगा अगर मैं चीजें यूज कर रहा हूँ. आज का स्टूडेंट टीचर से ज्यादा इंटेलिजेंट है बिकॉज उसके पास आज टेक्नोलॉजी. आज 2 से 2.5 साल का बच्चा जब कुछ रीडिंग करना शुरू करता है, जब वो ABC पढ़ने शुरू करता है, तो उसके हाथ में हम जैसे पेरेंट्स एक गैजेट उसके हाथ में देते हैं, जैसे मोबाइल फोन. और जब तक वो अपनी स्कूलिंग, प्लस टू, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, उसको सब पता है. हम क्या बताएंगे? तो वो मॉडर्न चौक एंड वो किताब खोल के चौक से लिखाना खत्म हो गया. दैट इज अ कन्वेंशनल ट्रेनिंग. और वो सभी चीजें पॉसिबली जब we have an innovation. Okay, now this thing, the methodologies that every 21st century teacher should know. Now, before discussing these innovation technologies, I have covered almost 5 to 6 innovation technologies. Again, I will tell you one story, and that story is that thing. आज जो है उसको ले लीजिए, अदरवाइज कुछ देर के बाद वो चीज आपको मिलेगी, उसका कोई फायदा. दैट इज वाई our seniors, our researchers told कि अपॉर्चुनिटी आपके डोर स्टेप पे रोज आती है, उसको ग्रैब करिए. वंस यू ग्रैब, ओके, लेकिन अगर आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं करते तो वो अपॉर्चुनिटी आपके पास नहीं है, या आएगी भी वो इतना लेट हो जाएगा कि उसका कोई फायदा. सो दैट इज व्हाई आई विल टेल यू व्हाई आई एम कोटिंग दिस story to you, because this is the high time. This is for all the teachers. This is also for all the students also. कि आज की डेट में जो अपॉर्चुनिटी, जो चीज आपको मिल रही है उसको ग्रैब करिए. ऐसा ना हो कि वो आपको बाद में मिले तब कोई फायदा. तो अंडरस्टैंड दिस थिंग इन अ वेरी बेटर ऑप्शन. आई विल टेल यू वन मोर स्टोरी. क्या होता है, एक कॉलेज में देयर आर 2 स्टूडेंट्स, वन इज मेल, अदर इज फीमेल. दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स. इन सम डेज, after certain journey of time, they are doing their graduation, they are doing their post graduation, they are become as एक दूसरे को पसंद करना शुरू करते हैं. एंड उस जमाने में, या इस जमाने की मैं बात करूं, बहुत चेंजेस हैं. उस जमाने में ऐसा नहीं होता था कि जो दो फ्रेंड्स आपस में अगर एक जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं 5 साल, 7 साल, 8 साल, उनमें इतना यू कैन से दैट व्हाट आई से द वर्ड यूज, इतना मतलब पैशन नहीं होता था कि वो एक दूसरे को प्रपोज कर सकते. तो हुआ क्या, एक जो फ्रेंड थे वो एक अपनी गर्लफ्रेंड को लाइक करते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं. तो उन्होंने क्या किया, एक बुक में एक मार्क लिख के दिया कि अगर आप भी मुझे पसंद करते हो तो प्लीज कल आप येलो कलर की ड्रेस पहन के आए, कि मेक अ चिट कि आई लाइक यू वेरी वेरी मच, एंड इफ यू ऑल्सो लाइक मी and we will start our journey as a husband and wife. So you should please
कम टुमारो विद द येलो ड्रेस। और वो स्लिप उन्होंने क्या किया, ट्रेडिशनल टीचिंग, ट्रेडिशनल लर्निंग, उन्होंने वो स्लिप क्या किया, बुक में रख के, बुक बंद करके उनको, एंड उनको ये बोला कि ये बुक है, प्लीज इसको थोड़ा रीड आउट कर। मजे की बात क्या हुई, the female partner took that book, came to the home, opened the book, and see what he has written. Now, the turning point comes the next day. What will happen? She came to the university or something college, but not wearing a yellow dress. She came with a green dress and put back the same book to that jam. अब वो जो लड़का था उसने उसको बोला था कि अगर तुम मुझे लाइक करते तो मुझे येलो ड्रेस में डाल के आइएगा, बट नेक्स्ट डे उसने देखा कि ग्रीन कलर है, उसने लड़की ने उसको लड़के को वापस दे दी। तो उसको लगा कि ऐसा तो नहीं है, ये तो मेरी ही फीलिंग्स थी, उनकी फीलिंग्स नहीं है। उन्होंने उस लड़की से बुक ली और बुक लेके, बुक को बिना खोले, बिकॉज वो अंदर ही मतलब डिप्रेशन, बुक लेके अपने घर पे चला गया। अब इस स्टोरी के हुए बहुत साल हो गए, 5 साल, 10 साल, 20 साल, टाइम, लड़के की शादी कहीं होगी, लड़की कहीं हो। After a certain period of time, almost 10 to 15 years, one day the gentleman opened the book and see the note and believe what has been written, what she had been written on that note. She had written, I like you very much. Can repeat, I like you very much. But unfortunately, I had no yellow color dress. That is why I am wearing a green color dress. Now the point will be noted here that opportunity. अगर वो उस दिन बुक खोल के देख लेते तो ऐसा कुछ, आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम बोथ आर रिग्रेटेड सब। सो पॉइंट इज, आई एम नॉट शेयरिंग किसी की पर्सनल लाइफ में यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, ये सिर्फ मैं ये चीज बता रहा हूँ कि आपके पास हर जगह पर अपॉर्चुनिटी आए, आपको उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना। ऐसा ना हो उस अपॉर्चुनिटी को आप थोड़ी देर के बाद ग्रैब करने की सोचें, तब अपॉर्चुनिटी आपके दोस्त है। यार मैं आप लोगों से, Excuse me, sir. Sorry to interrupt here. या Yeah, some as you said that we get opportunity and we should grab it. I agree with you. But sometimes when we are, having more than one opportunities, and then we are in a dilemma. So at that time, how should we, analyze it, and how should we decide that which side to go? Can you please shed some light on this? Yeah. Please, excuse me. I will discuss with this question at the end of the session because I'll discuss with this question very definitely. But question is that thing if I discuss right now, so my you can understand कि मेरा Sure, पूरा sir. वो Sure, रोड sure. Thank you, मजा है। thank you. Sure, sir. Well, Yes, welcome. thank you. I will But definitely discuss this but I question. want to tell you that I liked the story very much. You know the story very much. Thank you so much. No, Thank no, you so I much. liked it. I liked the story. Okay. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so Thank much. you, sir. Thank you, thank you. So the point is that thing you should be know that whatever the opportunity you have, you grab it. Because मैंने आपको पहले ही बोला कि अगर मैं आपको ये प्रेजेंटेशन वर्दी अभिषेक जी से बात करके आप तक सर्कुलेट करवा दूं, आप लोग उसको पढ़ भी लेंगे, लेकिन आई एम 100% श्योर जो एक फुटप्रिंट आपके ब्रेन पे रहेगा इस सेशन को लेके, वो आप नहीं लेंगे। एंड मेरा हमेशा यही एस्पेक्ट रहता है। I think this webinar, I think I had delivered almost 20 to 25 webinars earlier. I think this is my 26th webinar, and I will try to make this every webinar something like उसमें कुछ examples हों so that at the end of the day हमें पता रहे यार ये example हमें मिली। मुझे भी एग्जाम्पल कहीं से मिली है, ऐसा नहीं है कि मेरी एग्जाम्पल्स है। आई हैड अटेंडेड, I must, you can surprise or not surprise, during lockdown, 2 years lockdown, I had attended more than 150 webinars and I had more than 150 ऑनलाइन सर्टिफिकेट्स फॉर अटेंडिंग दिस वेबिनार्स। तो वहां से ये नॉलेज ग्रैब की। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेरी रहती है, आई थिंक यू कैन मस्ट सी दिस नोट पैड। मेरा हमेशा ये रहता है कि जब भी मैं कोई वेबिनार अटेंड करता हूँ कि मैं उसको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको एक जॉट डाउन करता हूँ, वो कहीं ना कहीं वो जॉट डाउन पॉइंट्स काम आते हैं। So I cover with 2 stories, and there are 2 more stories in left. Okay. So methodology innovation, Abhishek ji, it's 6:50. So I think I have to wind up this session for 7 o'clock now. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, Yeah. फिर I will do with anything. I will go with this presentation slightly low higher because इसमें तो सारा थियरी है, मुझे नहीं भी बताऊंगा तो आप गूगल करेंगे या यूट्यूब पे जाएंगे, आपको सब पता चल जाएगा। सो मैं अपनी मेन स्लाइड पे आ रहा हूँ। सो आई एम कमिंग, आई थिंक पार्टिसिपेंट्स आर एग्री विद मी दैट आई विल स्किप दैट स्लाइड्स। Sir, I think that some of mentioned in chat that's waiting for the different stories also. Someone wants to know Sonitiko. व्हाट दे वांट? Sir, she also wants to hear.
Another story. Okay, okay. I will discuss. I will discuss. Okay. So these are basically the innovation that is a flipped classroom. You all know. Second, we have a project-based learning. I'm not taking this into much more time. Corporate learning. Nowadays, आज की डेट में ये ट्रेडिशन आ गया है कि हम लोग इन चीजों पे फोकस कर रहे हैं. ये हमारा एक इनोवेशन है लर्निंग में, टीचिंग में. We have gamifications. We have problem-based learning. If anybody required any this type of presentation, I will share with you. You can go through that presentation. Okay. So I'm not taking much of time in this thing because so एक डेकोरम होता है, एक वेबिनार का एक डेकोरम होता है कि प्रेजेंटेशन बनानी होती है, तभी मैंने ये प्रेजेंटेशन में मटेरियल अडॉप्ट करा हुआ है. सो ये आप गूगल करके भी ये चीजें यूज कर सकते हैं. नाउ आई एम कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. व्हाई पैशन इज इंपॉर्टेंट फॉर अ टीचर. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. Most important. I had covered the topic that is I earlier I had used the two words in our today's webinar. One is passion, another is innovation. And what is innovation that I have already covered? That is flipped classroom, cooperative learning, gamification, project-based learning, each and everything. Now I coming to the main point. That is about the passion. Why passion is required for a teacher? Without passion, nothing can be possible. And mind it. ये है passion. क्या है passion? क्यों passion जरूरी है? You can see without passion, teacher can fail to inspire their students. When a teacher is passionate, their enthusiasm can be becomes contagious. अब मैं सारी स्लाइड्स अगर आपके पास पढ़ता हूँ, लिटिल बिट बोरिंग लगेगा. Now this thing. Can anybody tell me whose picture is this? Sir, he is the founder of Super 30 Coaching Institute, sir. Exactly, Mr. Anand Kumar. Yeah. So I think आप सबको पता होगा ये क्या है. He is the founder of Super 30. And what is Super 30? Super 30 is basically, you can say that, अगर इसको मैं थोड़ा सा लिंक करूं, it is basically एक इंस्टीट्यूट जहां पर लोअर मिडिल क्लास के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है सो दैट दे कैन क्रैक योर आईआईटी एग्जाम्स, योर जेडब्ल्यू मेन एग्जाम, योर नीट, योर मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन. एंड दिस मेंबर, दिस पर्सन, यू कैन बिलीव, इनमें पैशन था उनमें पढ़ाने का. और इनके पढ़ाए हुए बच्चे हर सुपर 30 बैच में कोई ना कोई एग्जाम क्रैक कर. और आपको जान के हैरानगी होगी, आई एम नॉट अगेन, आई एम हैंड फोल्डेड टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स टू बी देयर. प्लीज फॉरगिव मी जो भी मैं बोलूं. द थिंग इज, इसकी वजह से जो बिग माफिया इंस्टीट्यूट के इंडिया में थे, इन्होंने इनके ऊपर अटैक्स भी किए, इनको जेल तक जाना पड़ा. क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक सोशल कॉज के लिए काम कर रहे हैं. वो स्टूडेंट जो इतनी बड़ी बड़ी फीसेस अडॉप्ट नहीं कर सकते, वो फैमिली जो इतना बेयर नहीं कर सकते फाइनेंशियली, उन स्टूडेंट्स को उन्होंने पढ़ाया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को कंप्लीट किया. और बिग माफिया इंडस्ट्री, आई एम सॉरी, द यू कैन से दैट इंस्टीट्यूट माफिया इंडस्ट्री, 2 बार इनके ऊपर अटैक हुआ इसी वजह से. और ये क्यों? क्योंकि इनमें पैशन था. एक टीचर के लिए सबसे एक अच्छी चीज लगती है जब उसका स्टूडेंट एक सक्सेसफुल स्टूडेंट बन गया. सक्सेसफुल स्टूडेंट जब उसका बन के आता है, वो एक टीचर के लिए, एक टीचर के लिए मतलब एक, यू कैन से दैट, एक मतलब उसको लगता है कि हाँ यार मैंने कुछ किया. इट इज नॉट थिंग. जब तक स्टूडेंट टीचर के साथ है, आई एम सॉरी, स्टूडेंट आपकी इज्जत करेगा. वो क्यों करेगा? बिकॉज उसको बहुत से काम है. आपसे मार्क्स लेने हैं, आपसे इंटरनल लेना है, आपसे पेपर पास करवाने हैं. मजा तब है जब वो आपसे पढ़ के जाए और कुछ देर के बाद, 4 साल, 5 साल, 10 साल के बाद वो आपको याद करे. इट्स प्राइड मोमेंट फॉर यू जब टीचर्स डे पे आपको पुरानी विशेष आए. इट्स प्राइम मोमेंट फॉर यू जब आपके सोशल मीडिया हैंडल्स पे, फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, ऑन द टीचर्स डे, वो स्टूडेंट आपकी पिक लगाए और आपको शेयर करे. बेस्ट टीचर, वो एक टीचर के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तब टीचर कहता है यार ये लिया मैंने, ये कमाया. इसमें एक दो स्टोरीज है मेरी पर्सनल, बट आई एम नॉट सेइंग दी स्टोरीज टू हियर बिकॉज ऑलरेडी बहुत स्टोरीज हो जाएंगी. सो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है. मेरे कई स्टूडेंट्स हैं पास आउट होने के बाद अच्छी पोजीशंस पे, अगर आज मिलते हैं काफी मजा आता है. ओके, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट. हियर मैं आपको एक चीज बताऊंगा. दिस स्लाइड इज नॉट रिलेटेड टू द टीचर्स. दिस स्लाइड इज रिलेटेड टू ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो कॉर्पोरेट है, चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे वो प्राइवेट है. ये चार्ट हर जगह चलता है. व्हाट दिस हैविंग अ चार्ट. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट टाइप ऑफ एम्प्लॉयज होते हैं. पहली टाइप एम्प्लॉयज वो होते हैं जो बहुत पैशन होते हैं अपनी कंपनी के लिए. यार कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे इस कंपनी के साथ रहना, मुझे इस कॉर्पोरेट के साथ रहना है, मुझे इस एजुकेशन सेक्टर के साथ रहना है, चाहे डाउनफॉल है चाहे हाई फॉल है. आज मेरी कंपनी डूब रही है, मेरे को पैसा नहीं मिल रहा, नहीं यार, ये वही कंपनी है जिस कंपनी ने मुझे पाला, मुझे रोजी रोटी दी. ये होते हैं कुछ टाइप ऑफ एम्प्लॉयज इन ईच एंड एवरी कंपनी. एंड माइंड इट, in an organization, this type of employees only 4 to 5%.
ओनली 4 to 5%। तो सेकंड कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयज होते हैं उस इंडस्ट्री में जो सिर्फ जॉब के लिए, उनका काम है 10 से 4, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता क्लास में मेरे 20 बच्चे फेल हो रहे हैं, मेरे 30 बच्चे फेल हो रहे हैं, मेरे 10 बच्चे पास हो रहे हैं, कितनी परसेंटेज से पास हो रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको सिर्फ क्या है, मुझे आना है, लेक्चर पढ़ाना है, कोई सुन रहा है सुने, नहीं सुन रहा ना सुने, चौक मारे जो मर्जी करे, मुझे अपने 10 से 4 पे काम करना है। एट द एंड ऑफ द डे मुझे मेरी सैलरी से मतलब है। और माइंड इट, दिस टाइप ऑफ पर्सन अवेलेबल इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज 10 to 20%। ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, नॉट इन टीचिंग सेक्टर, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में। एंड द सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जिसकी हाईएस्ट डिमांड है, अबाउट 50 to 60% एक ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे इंप्लॉयज होते हैं जो एक डीमोटिवेटिंग फैक्टर, जिनका हमेशा काम ये है कंपनी के लिए या ऑर्गेनाइजेशन के लिए गलत करना। हमेशा वो एक तरह के ना कोविड होते हैं, सॉरी, वो एक तरह का कोविड है। उनका काम क्या है, यार ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, मैंने इतना काम किया, मुझे कुछ बेनिफिट नहीं मिला, मेरे सबॉर्डिनेट को कितना बेनिफिट मिल गया। मतलब उनका काम ही ये है कि जैसे ही उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस कंपनी में कोई नया पर्सन आए, उन्होंने उसको पकड़ना है और कंपनी की सारी नेगेटिविटी उनको बतानी है। ये है वो है, ये है वो है। और ये कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी होती है हर एक एम्प्लॉयर्स में जो एक बहुत खतरनाक कम्युनिटी मानी जाती है, और ये है मैक्सिमम 50 to 60%। सो क्वेश्चन इज, ये आपको सोचना है कि आप किस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है, और ये सारा डिपेंड करेगा आपके पैशन के ऊपर। आपके पास पैशन है, आप ये चीजें कर सकते। ओके, दिस इज द लास्ट स्टोरी दैट आई विल टेल यू, दैट आई हैव ऑलरेडी टेल एट अराउंड 6:15। मैंने 6:15 पे आपको बताया था कि लास्ट स्टोरी में आपसे डिस्कस करूंगा। दैट स्टोरी इज प्योरली बेस्ड अपॉन टीचिंग, एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स को ये स्टोरी अच्छी लगी। मैंने भी स्टोरी किसी से सुनी थी तो मैंने इसको यूज किया। दिस स्टोरी इज बेसिकली टैडी एंड स्टॉटर। क्या है ये टैडी एंड स्टॉटर? देयर इज अ थिंग, टैडी स्टॉटर की स्टोरी क्या है, क्या होता है। एक नया नया टीचर अपने टीचिंग प्रोफेशन को ज्वाइन करता है। डियर पार्टिसिपेंट्स, गिव मी ओनली 5 minutes, आई विल कवर दिस स्टोरी इन 5 minutes, बट आई कैन टेल यू दिस 5 minutes टेक अ वेरी वेरी गुड इंप्रेशन ऑन योर माइंड अबाउट टीचिंग। क्या होता है, एक नया नया टीचर इस इंडस्ट्री में ज्वाइन करता है, उसको एक क्लास दी जाती है, और वो क्लास एक सेकेंडरी क्लास। जब उसको सेकेंडरी क्लास एक दी जाती है, वो टीचर बड़ा नर्वस होता है। बेसिकली फीमेल टीचर है, शी इज अ फीमेल टीचर। वो बड़ी नर्वस सी होती है क्लास में जाना। तो वो क्या करती है, अपने नर्वसनेस को दूर करने के लिए कि मैं क्लास को कैसे हैंडल करूंगी, तो वो क्या करती है, जैसे क्लासरूम में एंटर करती है तो बड़ा एक मतलब जॉली मूड बना के, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आई एम योर टीचर, ये मतलब ये बड़ा इंटरेस्टिंग करती है, सो दैट कि वो अपने जो उसके अंदर डर है उस डर को बंद कर सके। सिंस उसका वो पहला दिन होता है तो स्टूडेंट्स भी मोटिवेटेड होते हैं। सो एक बहुत अच्छा ब्रिज बनता है स्टूडेंट्स एंड टीचर्स के बीच में। देन आहिस्ता आहिस्ता क्या है, वो स्टूडेंट्स उस टीचर को अडॉप्ट करना शुरू कर, वो टीचर भी उन स्टूडेंट्स को अडॉप्ट करना शुरू कर। अब इसमें क्या होता है, देयर इज वन स्टूडेंट जो हमेशा उस क्लासरूम के साइड बेंच पे बैठा होता है, और साइड बेंच पे जो उसने मतलब जो उसका ड्रेसिंग सेंस होती है बड़ी शार्पी सी होती है। मतलब उसके हेयर कॉम्ब नहीं होते, यूनिफॉर्म उसकी बाहर होती है, डर्टी फेस, नॉट बाथिंग डेली। तो टीचर क्या करती है, हर स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करती है, और उसके साथ वो इंटरेक्ट नहीं करती। उसको लगता है कि ये क्या है, ना कोई बात करता है ना कुछ करता है। तो आहिस्ता आहिस्ता 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन वो क्या करना शुरू करती है, उस स्टूडेंट को इग्नोर करना शुरू करती है। बट ऑब्वियस है वो स्टूडेंट भी उस मूड में नहीं था, तो स्टूडेंट भी इंटरेक्ट नहीं करता। तो इसमें क्या होता है, एक स्टूडेंट और टीचर के बीच में बहुत बड़ा गैप आना शुरू होता है। अब कुछ देर के बाद, आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, से 6 months और 7 months, एज यू ऑल नो, एक पीटीएम होती है, जैसे पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, जहां पर स्टूडेंट का पूरा डेटा जो है वो पेरेंट्स को दिया जाता है, तो उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट बनी होती है। तो सिंस इस टीचर ने मिड ऑफ द सेशन ज्वाइन किया होता है, तो ये जब उस बच्चे की प्रोग्रेस रिपोर्ट पढ़ती है, तो उसमें लिखा होता है कि फर्स्ट मंथ दिस स्टूडेंट इज वेरी इंटेलिजेंट, दिस स्टूडेंट इज वेरी कोऑपरेटिव, दिस स्टूडेंट इज वेरी इंटरेक्टिव, शी गॉट सरप्राइज्ड। वो अगला पेज खोलती है, वो देखती है कि वो बच्चा बहुत क्यूरियस है चीजें पूछने में। उसको ना एक मतलब ये सोच लग जाती है कि इसमें हो क्या रहा है, जो मैं प्रिडिक्ट कर रही हूँ स्टूडेंट के बारे में, ये तो टोटली रिवर्स है। आज की डेट में ये बच्चा ना इंटरेक्ट कर रहा है, गंदे से कपड़े पहने हैं, प्योरली वो क्लासरूम में नहीं आ रहा, इंटरेक्टिव नहीं है। लेकिन इसकी पिछले 6 महीने की स्टोरी तो कुछ और ही बता रही है। देन वो क्या करती है, वो दूसरे कोऑर्डिनेट से बात करती है कि इस स्टूडेंट की प्रॉब्लम क्या है।
और उस टीचर को पता चलता है कि कुछ देर पहले ही हैड लॉस्ट हिज मदर इज बेसिकली a veterinary patient and he had lost his, और आज उसके घर पे उसको अटेंशन देने वाला कोई नहीं। देन सडनली उसका माइंड चेंज, नो नेक्स्ट डे व्हाट विल हैपन, वो क्लास में जाती है और स्टूडेंट को थोड़ा टेंशन देना शुरू कर, उसे स्टूडेंट नहीं टेंशन देता, वो अपना ट्राई करती है कि मैं स्टूडेंट से इंटरेक्टिव करूं, बट स्टूडेंट रिस्पॉन्ड नहीं। अब क्या होता है, द डे कम टीचर्स डे। ऑन टीचर्स डे यूजुअली हर स्टूडेंट अपने टीचर को कुछ गिफ्ट्स देता है, कुछ चीजें शेयर करता है। तो क्या होता है कि पूरी क्लास अपने टीचर को गिफ्ट्स देती है इन अ वेरी, यू कैन से दैट, गुड कलर पैकेजिंग, गुड मटेरियल। और ये स्टूडेंट भी क्या करता है, एक गिफ्ट रैप करवाता है, टूटा फूटा सा गिफ्ट रैप, पुरानी ओल्ड शीट, और वो भी स्टूडेंट को देती है, सॉरी टीचर को देती है। अब इस टीचर में क्यूरियोसिटी थी कि देखने के लिए कि ये बच्चा मेरे लिए क्या रहा है, तो वो टीचर क्या करती है, बाकी सारे गिफ्ट को साइड पर रखती है, उसी स्टूडेंट का गिफ्ट खोलती है। जैसे वो स्टूडेंट का गिफ्ट खोलती है, शी वाज सरप्राइज्ड। उस गिफ्ट के अंदर क्या है, एक परफ्यूम की बोतल होती है हाफ फिल्ड, और एक ब्रेसलेट है टूटा फूटा। बट वो क्या करती है, वो ब्रेसलेट पहनती है और परफ्यूम को स्प्रे करने के बाद जैसे ही वो उसके पास से निकलती है, तो वो जो स्टूडेंट है उस टीचर का हाथ पकड़ता है और बोलता है, मैम आज मुझे सेम वही स्मेल आ रही है जो मेरी मदर से मुझे। दिस इज द टचिंग मोमेंट फॉर अ टीचर एज वेल एज फॉर स्टूडेंट। जो टीचर है गेट क्राइड, उसकी आंखों में आंसू आता है, एंड शी अडॉप्ट हिम एज हिज चाइल्ड। आहिस्ता आहिस्ता उस बच्चे में चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। कुछ देर के बाद वो अपना स्कूलिंग खत्म करता है, वो कॉलेज चला जाता है। जब वो कॉलेज जाता है, वो वहां से उसको एक लेटर ड्राफ्ट करता है टीचर को कि आज मैम मैं ग्रेजुएट हो गया, राइट मोमेंट फॉर मी, ऑल ड्यू टू योर एफर्ट्स। कुछ देर के बाद फिर से एक लेटर आती है, मैम आज मैं डॉक्टरेट बन गया, ऑल ड्यू टू योर एफर्ट्स। कुछ देर के बाद एक लेटर आती है, मैम आज मैं पोस्ट डॉक्टरेट कर गया, ड्यू टू ऑल योर एफर्ट्स, मैंने तो जीना भूल दिया था, आपने मुझे जीना सिखाया। एंड सडनली वन डे व्हाट विल हैपन, मैम को एक कार्ड आता है, उस कार्ड पे लिखा होता है कि ऑन दिस डेट आई गॉट मैरिड एंड आई इनवाइट यू इन अ प्लेस वेयर आई थिंक माई मॉम डिजर्व्स। नाउ क्या होता है, टीचर उस दिन तैयार होती है, शी वेयर द सेम ब्रेसलेट, sprayed the same perfume and go to this marriage function। वो स्टूडेंट उनको अपने साथ बिठाता है और बिठा के अपनी रूम से बताता है, इन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ पहुंचा। इस पूरी स्टोरी का एक पॉइंट ये है कि इस स्टोरी में टीचर ने स्टूडेंट को पढ़ाया और स्टूडेंट ने टीचर को। एक माइंड सेटअप, टीचर का माइंड सेटअप अबाउट स्टूडेंट टोटली चेंज, एंड स्टूडेंट का माइंड सेटअप अबाउट टीचर टोटली चेंज। दिस इज कॉल्ड एज अ प्योर पैशन, दिस इज अ प्योर पैशन। एक चीज छोटी सी मैं यहाँ डिस्कस करूंगा आपके साथ। बहुत अच्छा लगता है जब आपका पढ़ाया हुआ स्टूडेंट एक पोजीशन पे पहुंचता है और आपको याद करता है, देन एक प्राइड मूवमेंट आती है। आई रिमेम्बर मेरा एक स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ाए इस 15-16 साल की जर्नी में। कुछ देर पहले मैं एक छोटी सी अपनी अपनी लाइव एग्जांपल, ये तो सारी आई डोंट नो कहाँ से स्टोरीज आई है, लेकिन मैं आपको जो मैं अपनी स्टोरी बता रहा हूँ विद इन 2 मिनट्स, ये मैं अपनी स्टोरी बता रहा हूँ। मेरे एक स्टूडेंट थे, उनको मैंने पढ़ाया, ही हैड डन हिज इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एट गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो कुछ देर के बाद वो इंजीनियरिंग करके चले गए, तो मेरा भी उनके साथ राब्ता खत्म हो गया। जस्ट नॉर्मल स्टूडेंट जैसे हम क्लास में पढ़ाते हैं। कुछ 3 या 4 साल पहले व्हाट विल हैपन, मैं स्कूटी से जा रहा था, सडनली एक चौक पे रेड लाइट हुई, तो रेड लाइट पे मैंने स्कूटी स्टॉप किया और पीछे से पुलिस की एक गाड़ी आती है along with some escort। एक गाड़ी आगे, गाड़ी पीछे, बीच में एक गाड़ी, और देयर सायरन कर रही है, और सडनली साइड गाड़ी रुकती है, और सिंस वो सायरन कर रही है तो मैंने थोड़ा स्कूटी साइड पे किया। सडनली व्हाट विल हैपन, 3 to 4 मेंबर्स ऑफ पुलिस मेंबर केम आउट द एस्कॉर्ट कार, और मुझे आके कहते हैं सर साइड पे आ जाइए। थोड़ा सा ऑकवर्ड ऑकवर्ड क्या, थोड़ा स्कैरी लगता है कि यार ये मैंने क्या कर दिया। व्हाट हैपन, नहीं नहीं आप सर साइड पे आ जाइए। मैंने अपनी स्कूटी साइड पे लगाई, मैं नीचे उतर गया, एंड सडनली आई सॉ दैट माय स्टूडेंट, ही इज एसपी जम्मू, या क्लियर आईपीएस एग्जाम। वो गाड़ी में बैठा और गाड़ी से उतरा नीचे, ही टच माय फीट द रोड साइड एंड आस्क्ड हिज एस्कॉर्ट टू प्लीज टेक द सर स्कूटी। अपनी गाड़ी में अपने ड्राइवर को उसने बोला पीछे बैठिए, अपनी गाड़ी में ड्राइव किया, मुझे बिठाया, एंड ही से सर प्लीज मेरे पास अपने नियर बाय स्टेशन में मुझे लेके गया, ऑफर्ड मी द चेयर, सर प्लीज आप यहाँ बैठिए। मैंने कहा दिस इज नॉट माय चेयर, दिस इज योर चेयर। से सर आपने पढ़ाया सिर्फ क्लासरूम में नहीं, हमें याद है कि हम आपसे आउट ऑफ द डेज, आउट ऑफ द आवर्स भी आके आपसे पूछते थे, आप हमें पढ़ाते थे, आपकी वजह से। सो वो फीलिंग
पता चले. दिस इज कॉल्ड एज द सक्सेसफुल टीचर एंड दिस इज कॉल्ड एज द पैशन. आई थिंक जितने भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ हैं, हर एक की अपनी अपनी स्टोरी होगी. अगर मैं स्टोरी कवर करने बैठ गया बहुत टाइम. सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट्स हु हैव लिसन्ड मी. आई थिंक फ्रॉम द लास्ट वन एंड मोर देन 1.5 hours. So our job is to teach the students we have, not that ones we have to like or ones we have to those we have right of them. So thank you so much for the lovely participations that they are listen my the webinar very patiently, and I hope I met your expectations. I met the expectations of SEMS organization, Mr. Abhishek's expectation, Garg sir's expectations. I'm little bit I say that now ki expectation se khara utra. Thank you so much to all the present. Thank you, sir, for this session, and I hope our participants learn many new things from this session. Sir, there are sir few questions which our participants want to know. So, shall we start? Yeah, definitely. Sir, how someone can improve their skills to get a job nowadays? See, it is audible, na? Yeah. Yeah. Sir. This question is on the chat box. No, sir. I got this question Okay, from okay, our okay. YouTube Okay. audience. You can please repeat the question. Sir, one of our YouTube audience wanted to know that how he or she can improve his skills to get a job as per his See, choice. yeah, I can understand. The very first important thing is that thing. In order to get the job, you Hmm. should be defined. You should be confident that what type of job you have. ऐसा नहीं है कि मैं एक टीचर हूं तो मेरे आने वाले जारी जनरेशन ही टीचर रही. मैं एक टीचर, अगर मैं अपनी बात करूं, मैं अपनी एग्जांपल यहाँ पर कोट करूं, मेरी फैमिली में कोई भी टीचर नहीं. माई फैमिली इज बिलोंगिंग टू सम बिजनेस फैमिली. सो मैं टीचर था. और मैं एक चीज और बताऊं यहाँ पर कि टीचर मैं एज ए पैशन नहीं आया था कि मैं सोच के आया था कि मुझे टीचर बनना है. जब मैं अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था तो मेरे को ये नहीं था कि मुझे टीचर बनना है. हाँ, मैंने टीचिंग प्रोफेशन ज्वाइन किया, बट उसके बीच में जब मेरा देखा कि नहीं, पैशन क्या है, कैसे मैं चीजों को कवर कर सकता हूँ, नाउ आई एम डेज अ गुड टीचर. तो क्वेश्चन इज दैट थिंग, आपको कौन सी स्किल्स लेनी है. स्किल्स डिपेंड्स अपॉन कि आप किस टाइप ऑफ जॉब को ओरिएंटेड करना चाहते हैं, आप किस टाइप ऑफ जॉब पे जाना चाहते हैं. अकॉर्डिंग दैट जॉब you can improve your skills. If you go for some administrative work, if you go for some you can say that defense force, तो उस टाइप की आपको स्किल्स लेनी पड़ेगी. ऐसा नहीं है कि अगर एक ने एक लाइक कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पेपर क्लियर कर दिया तो बाकी सारे भी इसको देखा देखी में क्लियर कर देंगे. ऐसा नहीं हो. Yes, sir. Correct. And sir, our next question is that she wants to know that how she can overcome the challenges that she is facing to get a appropriate job. चैलेंजेस वही हैं आपके. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैलेंजेस ये हैं कि आज की डेट में मैंने आपको बताया कि टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा वास्ट हो चुकी है कि आज मैं जो चीज डिलीवर कर रहा हूं, कल वो चीज सेम नहीं रहेगी. सो चैलेंजेस यही है कि आपको अकॉर्डिंग टू द मार्केट तैयार होना पड़ेगा. वो पुराना जमाना, मैंने आपसे पहले ही बात कर दी, वो पुराना जमाना खत्म हो गया जब हम लोगों को एक एनसीईआरटी की बुक लगी थी, हमने वो पढ़ा और हमने जाके वो डिलीवर कर दिया. आज की डेट में वो चीजें खत्म हो चुकी हैं. आज की डेट में सिंस आई एम बिलोंगिंग फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ. अगर आज की डेट में मैं अपने स्टूडेंट को बेसिक बोलता हूँ, जो बेसिक लॉ है दैट इज ओम्स लॉ, मैं उसको बोलता हूँ कि व्हाट इज ओम्स लॉ, तो मैं उसको डेफिनेशन क्या दूंगा, वो मुझे ज्यादा डेफिनेशन समझाएगा ओम्स लॉ की क्या है. सो चैलेंजेस ये हैं कि आपको मार्केट एक्सपेक्टेशन से ज्यादा कवर अप करना है. वही आपको मेन चीज जिता. Yes, sir. Sir, our next question is next and last question is that how science and tech can improve his skills to improve herself. Just repeat. How science and technology can help her to improve herself to do much more the See, work. this is the important thing. Na? This is the most important thing because today's era is basically the technological era that I have already told you that हमारे जमाने में अगर मुझे एक या दूसरी जगह से इंटरेक्ट करना पड़ता था तो मुझे क्या है, आपको लाइक मुझे आज भी याद है कि अगर मुझे कोई मेरा टीचर मुझे अपनी ग्रेजुएशन के टाइम पे बोलता था कि ये असाइनमेंट बनानी है, तो मुझे क्या है, मुझे इंटरनेट पे जाना पड़ता था. उन जमाने में इंटरनेट नहीं होता था, मुझे साइबर कैफे में जाके एक गूगल को एक्सेस करना पड़ता था एंड गूगल विल टेक अराउंड 30 minutes टू टेक द होम पेज. बट आज की डेट में इंटरनेट इतना ज्यादा एक्सेस हो गया कि आपके क्लिक के ऊपर ही आपका सारा चल रहा है. सो वी आर डिपेंडेंट अपॉन साइंस एंड टेक्नोलॉजी ना. वी आर डिपेंडेंट. आज की डेट में मेरा कहने का मतलब ये है कि वेन एवर यू हैव टू गो टू द क्लास फॉर टेकिंग अ लेक्चर, यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड. अगर आपको 35 मिनट का लेक्चर क्लासरूम में लेना है तो माई
you can say that opinion or my think is that to all the teachers to be present there, अगर आपको 35 मिनट का लेक्चर क्लास में डिलीवर करना है तो आपको उसकी तैयारी 1 घंटे से ज्यादा करनी पड़ेगी, सो दैट कि आप जाके गुड लेक्चर, और वो आपको हेल्प करेगा, साइंस और टेक्नोलॉजी ही हेल्प करेगी, और कोई आपको हेल्प नहीं कर सकता। Yes, sir. You are right, sir. बिल्कुल आप सही बोल रहे हो। Sir, thank you, sir, for answering this question, and I hope our participant learn many new things from this session. Thank you so much, Abhishek ji, for giving me the platform, and I hope I met with the expectations of the participants for this lecture. Thank you so much. Yes, sir. Definitely.